हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति राजपूत और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एग्जैक्टली है क्या? सो इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द सराउंडिंग एक्सटर्नल कंडीशन इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब हमारे आसपास जो भी बाहरी कंडीशंस प्रेजेंट है जो कि हेल्प करती हैं ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल्स के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर जो है अपनी अपनी तरीके से डेफिनेशन दी है, जैसे कि टर्क ने दी है यहाँ पे। ये जो एनवायरमेंटल साइंस है इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। मतलब कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा तरीके के सब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। सो एनवायरमेंटल साइंस वास्ट तो है ही और ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जहाँ पर हम इंटर रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं ऑल द लिविंग थिंग्स, जिसके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में हम पढ़ते हैं ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, जिसकी सॉइल है, एयर है, वाटर है, एनर्जी है। सो इन दिस वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन उनको पढ़ने के लिए वी ऑल्सो नीड टू स्टडी द सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, botany, zoology, physiology, biochemistry, biophysics, chemistry, mathematics, statistics, computer science, as well as anthropology. So यहाँ पर अब जब हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, एनर्जी, वी नीड टू स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, मीटीरियोलॉजी, जो कि वन ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं, मेजर फील्ड है अर्थ साइंस में। Here we also study about the non-living components, which is very important, which is present in environment in the form of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Lithosphere का मतलब होता है land, hydrosphere means water and atmosphere that is air. So ये जो biosphere है which is an important component of environment जो कि earth में present है, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम मिल जाएंगे। सो इसीलिए लाइफ जो है वो हमेशा बायोस्फीयर में मिलेगी, दैट इज ऑन द लैंड, ऑन इन द वाटर एज वेल एज इन द एयर। सो हियर एनवायरमेंटल स्टडी करने के लिए वी नीड टू स्टडी द नेचुरल साइंस, और एनवायरमेंटल स्टडी करने के लिए वी नीड टू स्टडी सोशल साइंस सब्जेक्ट्स ऑल्सो लाइक इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, civics, history, as well as the politics. So here, this is how the environmental science, it directly or indirectly, it is going to interact with the human social, mental, economics, political, as well as the cultural aspects. So we need to study social science also. So here, further, we will study a brief description about the idea of multidisciplinary nature of the environmental science. So first is about the biology and environmental studies. So biology में जो है हम हमेशा स्टडी करते हैं अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं लाइक दी प्लांट्स हैं, लाइक दी एनिमल्स हैं, वी स्टडी अबाउट देम। Even here we study about the fungi, even we study about the bacteria and also the viruses, हम इनके बारे में स्टडी करते हैं बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। और हम यहाँ पर स्टडी करते हैं द लाइफ साइकिल, द इकोसिस्टम, फूड चेन, एनर्जी ट्रांसफर, द कंजर्वेशन। हियर ऑल दिस इज स्टडीड इन द बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं अबाउट द बॉटनी एंड द एनवायरमेंटल साइंस। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, वी डील विथ कम्प्लीटली अबाउट दी प्लांट्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। सो हमारे अर्थ में वाइड वैरायटी के प्लांट्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, दे आर अवेलेबल ऑन अर्थ, जहाँ पर हियर 33% लैंड इट इज़ कवर्ड बाय प्लांट्स, and plants play a very important role in precipitation. They control the floods. Deforestation result in desertification. All these things are studied in the environmental science. Next आता है zoology और environmental science, जहाँ पर here we always study only and only about the animals, only about the animals life which is vast, present on earth, and they play a very important role in the food chain. फूड चेन में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हियर वी ऑलवेज स्टडी अबाउट द बिहेवियर क्या है एनिमल का, हैबिटेट क्या है, कहाँ रहते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनिमल्स इन द एनवायरनमेंट, दिस इज़ व्हाट वी स्टडी। नेक्स्ट इज अबाउट द फिजिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस। हियर इन द फिजिक्स वी ऑलवेज डील अबाउट द एनर्जी, कौन सी टाइप्स की एनर्जी हैं, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, एनर्जी क्राइसिस क्या है, और हाउ इको फ्रेंडली the energy production can be done. This is what we study.
Here, next is the chemistry and environmental studies. जहाँ पर here we deal with all the chemicals. Here, the chemicals like the chemical reactions hazardous है या toxic chemicals हैं, toxic chemicals or gases in air which causes pollution, which is harmful for the environment and living organisms, और किसकी वजह से how global warming problem is raising more and more because of emission of the carbon dioxide. So ये सारे chemicals और उनकी क्या ill effects हैं, this is what we study in this. Next is about the mathematics, geometry, statistics, and environmental studies, where we study how there is an increase in the population or in the world, or urbanization, industrialization कैसे हो रहा है, and how they are creating problems in the environment. So here we studied with the help of the maths as well as the statistics. Next is civics and environmental studies. There are many rights given to men by constitution. So एक civilized person को जब हम देखते हैं तो उसकी कौन कौन सी duties present हैं. What are the duties of a civilized man? Or which is important for the better and healthy environment. So every person should undertake the tree plantation, conserve water and energy. So this is how one should keep our surrounding clean. If we keep our rivers, lakes and seas clean and protect them, then only we are able to protect our environment. So this is our prime duties. These things we study in the civics. Next is history and environmental studies. So we can study and compare the environment which is present and the ancient type environment. So here we can also study the wars and the impact on environment and humans. During Gulf War, how aquatic and aerial environment was deteriorated and how it affected humans and aquatic animals. So this is what we study in the history and environmental studies. Next is about the economics and environmental studies. Here human needs क्या हैं और किस तरीके से लिमिटेड सोर्सेज को यूज करके बैलेंस किया जा सकता है विद द एनवायरनमेंट. दिस इज व्हाट वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स. सो ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन and sustainable use of natural resources, many problems are created in human life. So these problems are studied in environmental studies. नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री प्रिपेयर द पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट. मोर एम्फेसिस is given on economics and industrial growth, but there is always loss of natural resources. So जैसे कि problems जैसे कि pollution है, they are invited. How these problem can be solved and progress किस तरीके से किया जा सकता है, this can be studied. Next is geography and environmental studies. Here there are a number of environment related factors in geography. So geography and environmental studies, they are very much closely related subjects. इस तरीके से interrelationship between man and environment is very well studied in this subject, that is geography. So this is how our environment topic ends, and thank you very much.